Good morning, dear children. So, in the last video or in the last session of your social studies, I have sent you an animated video. Okay, that was an introductory part of this chapter. I hope you all understood that what is actually the local self-government. See, children, as you know that social study has three parts: history, geography, and civics or the political science. So civics or political science is actually means the study of the rights and the duties of the citizens, and also it is about awareness of the civics make us or it is an awareness about the powers and the functions of the three organs of the government, that is legislative, executive and judiciary. Okay, it also helps us to become aware about the responsibilities and about uh, how citizen should abide the law of the country. Okay, so this is all about the administrative system of a country. Okay, that is in political science or the civics. Now the rural self-government means where the people elect their representative among themselves within the village. अगर एक विलेज का कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक एड्रेस करेगी, उसके लिए कोई सोल्यूशन सेंड करेगी, तब तक हो सकता है इट बिकम्स टू लेट और वो सोल्यूशन इतना इफेक्टिव नहीं हो, बिकॉज दे डोंट लिव देयर. Okay, so the person who lives there, who stays there, they have the better solution for their problem, or that can be done in the more faster way. Okay, so in the local self government or the local self government means a government of a local people. Okay, now for example think if in the Porbandar there is a problem about the drinking water. Okay, then if suppose Prime Minister Narendra Modi want to solve it, then he can give a solution, no doubt, but either each and every house is getting the water, when the water is getting, either it is a purified water or not. And so these kind of the problems which is at the ground level requires more time in the assessment. Okay, whether the problem is solved or not, if someone from the Delhi observed the problem in the Porbandar. The same happens suppose if the CM of the Gujarat uh, look at the problem, then also it's because they are sitting in the Gandhinagar. Okay, now if the municipality of the Porbandar look into the problem, then it can be solved more faster in the more effective. Okay, because they are in the Porbandar, they can go to each and every house, they can see whether the pipelines reach to each and every home or not, they can hear to the people whether they really get the solution or not. So this is how the local government works more effective, and it also lessen the burden of the state and the central government. Okay, now this local self-government is divided into the part, that is the rural and urban. Rural means which is a village, and urban means town or the city. Okay, now we will first go through the rural type of the local self. That is a rural administration or the rural self-government has a three hierarchy level. Okay, that is the village, taluka and district. Means the local self-government at the rural level is divided into the three category, and that is the village, taluka and district. Village is at the village level. Taluka means it is a collection of some villages, that is a taluka, or it is also known as the block.
and then it is a district, means that is a collection of talukas or the block. Now if we see in the urban areas or the city administration, then if it is in small city or a town, then it is a municipality, and if it is a bigger cities like Mumbai, Delhi, Bangalore, then it is a municipal corporation, or sometimes it is also known as a corporation. Now we will first see the local self-government at the rural area, that is at the village level, and that is known as the Panchayati Raj. Okay, and Panchayati Raj was very much advocated by Gandhiji also, and we have accepted this Panchayati Raj or the three-tier system because it is divided at the three level. Panchayati Raj at the village level, Taluka Panchayat at the Taluka level, and the district Panchayat at the district level. Now you can see this pie chart also categorizing these three levels of the local self-government in the rural administration. In the rural area, that is in the Panchayati system, is run by the representative elected by the people at the local level. Okay, this institution, which is run by the elected representative of the local people, they are known as the local self-government organizations. Okay, now the Panchayati Raj in India started from the Bagadra village of Nagaur district in the Rajasthan on the 2nd October 1959. तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है विलेज का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो 3 लेवल का सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, दिस वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द राजस्थान, एंड द नेम ऑफ विलेज इज द बगद्रा, दैट इज इन द नागौर district, and it is implemented on the 1st April 1963 in Gujarat. Okay, so this you have to remember this date, 1st April 1963 in Gujarat and the 2nd October 1959 in Rajasthan. Okay, so student, you can see this picture over here, is it? At the top level it is the central government. So what is the work of the central government? They look after the bigger issues, okay, like the safety of the country, okay, means the border security, then regarding the money or the economy, okay, they have to look that, then regarding the relationship with the foreign countries, these all work are done by the central government. Then what is the work of the state government? Yeah, they have to look into the whether the water facilities and the state administration looking into the issues which are governed by the local self government. For example, जैसे आप देखोगे कि नर्मदा वाटर प्रोजेक्ट है, so that is governed by the state government because that was a bigger project. Okay, but नर्मदा का पानी एक बार कैनाल के थ्रू जब स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है तो उस एरिया में लोगों के घर तक वो पीने का पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है या कैसे पहुंचाना है, वो काम किसका है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. ओके, देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, दे लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो दे हैव टू लुक about the development work of all the districts. Okay, means the whatever the taluka works, they have to look into that work. Then what is the work of the taluka panchayat? They looks for the taluka work, and the gram panchayat means they look into the day-to-day work development of a particular village only. Administration of Gujarat is carried out by the Gujarat government. Okay, our country is governed by the central government, and thus the Gram Panchayat is a base of all the
गवर्नमेंट। अगर आपका ग्राम पंचायत अच्छा चलेगा then only then only the taluka panchayat will be good, that district. And if the district will work accordingly, then only the state government will work accordingly, and then only the country, or we can say a central government or the union government, work efficiently. Okay, so gram panchayat or the local self government is very important in the administration. Okay, so what is a gram panchayat? So gram panchayat is composed in the village having a population from 500 to 25,000. जहाँ जिस रूरल एरिया का, जिस विलेज का 500 से 25,000 का पॉपुलेशन होता है, वहाँ ग्राम पंचायत बनती है और कम से कम 8 मेंबर्स होते हैं। सी एक्चुअली पंचायत वर्ड का मतलब होता है 5, पंच मीन्स 5 लीडर्स। तो जो पंचायत का सिस्टम है वो इंडिया में नया नहीं है। एंशिएंट टाइम में भी विलेज में जो रूलिंग का सिस्टम था, जो गवर्नेंस का सिस्टम था, वो यही था, पंचायत सिस्टम ही था। उसमें 5 लीडर्स मिलके उस विलेज के लिए काम करते थे। तो बट टुडे एज the population is more, so it is not 5, but the system is same, that's why it is known as the panchayat system. So the village people elect on the basis of the population, minimum 8 and maximum 16 candidates on the basis of the population, and this head of the gram panchayat is called the sarpanch. उन लोगों ने सपोज एक गांव है, वहां पे 8 लोगों का इलेक्शन होना है, ठीक है, तो सारे लोग मिलके इन 8 लोगों को वोट करते हैं। इससे तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बट जिन 8 लोगों को मेजॉरिटी वोट मिलता है, दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द ग्राम पंचायत। ओके, उसमें से कोई एक क्या बनता है, सरपंच। और सरपंच के लिए एक्सक्लूसिव, जैसे कि जो लोग खुद को ये कह के लोगों से वोट मांगते हैं कि हम सरपंच बनेंगे, सो for the sarpanch there is an exclusive election. Okay, voter elect sarpanch through the direct voting. ऐसा नहीं होता कि उस 8 में से कोई एक सरपंच बनेगा, नो, सरपंच was exclusively elected by the people directly. Then the wards member are elected by the voters of the concerned wards. The gram panchayat election are not contested by any political party or on the symbol of any political party. अभी आप सोचोगे कि जैसे म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है या स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, उससे जो पंचायत का इलेक्शन है वो बहुत ही अलग होता है। जो पंचायत का इलेक्शन होता है उसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, ओके, आप, ये सब नहीं होते हैं। The people there doesn't contest the election on the basis of the political party or on the symbol of any political party. Just the people who want to contest for the election, they stand and urge people for their vote. And that's why it kept so that the administration at the lowest level remain out of the politics actually, ताकि जो विलेज लेवल पे काम होता हो उसमें जो पॉलिटिकल राइवलरी होती है उसके कारण लोगों का काम नहीं रुके. That's why it has been set up in such a way. The Sarpanch and the member of the Gram Panchayat together decide the work's development by making resolutions on the development. और जो सरपंच होता है और जो ग्राम पंचायत के और मेंबर्स होते हैं वो एक साथ बैठ के कोई भी डेवलपमेंटल वर्क पे काम करते हैं. Now, other than these 8 members, including the Sarpanch, there is a one member which is a representative of the state, or which is a representative of actually the government at the state level. Okay, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होता है
वहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई भी नहीं होता, इसलिए एक मेंबर ऐसा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से वहां होता है। ओके, एंड ही इज नोन एज द तलाटी कम मिनिस्टर। ओके, मीन्स जैसे सरपंच हर 5 साल के बाद बदल सकते हैं, जैसे पीएम सीएम बदलते हैं, तो वैसे ही सरपंच बदल सकते हैं, लेकिन जो तलाटी कम मंत्री होता है या मिनिस्टर होता है वो कैसा होता है, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वैसे ही तलाटी कम मिनिस्टर है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो विलेज लेवल के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का रिकॉर्ड रखता है। Okay, he keeps the record of everything, and that's why, and he is known as the talati cum minister. He is also known as the secretary. Now he handles the administrative work, collect the tax, make the report of the gram panchayat, and prepares the gram panchayat forms and keep the records of the budgetary accounts. उसका काम, सब चीज का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का रिकॉर्ड रखने का काम उसका होता है। ग्राम पंचायत जब ग्राम सभा कितनी बार बुलाया, उसमें क्या डिसाइड किया, कितने काम हुए, स्टेट गवर्नमेंट ने विलेज को कितना पैसा दिया है काम करने के लिए, उसमें से कितना पैसे कहाँ यूज हुए हैं, सो ये सारा बजट अकाउंट रखने का काम भी उसी का होता है। अभी हम लोग जैसे गांव में जाते हैं तो वहां कोई लैंड रिकॉर्ड का काम है, टैक्स का काम है, रेवेन्यू का काम है, तो ये सारा रिकॉर्ड आपको कहां से मिलेगा, तलाटी कम सेक्रेटरी। इट इज हिज ड्यूटी टू कीप ऑल सच रिकॉर्ड्स ऑफ अ विलेज। द ऑफिस ऑफ अ ग्राम पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड द विलेज सेक्रेटरीट। और ये ऑफिस जहाँ पे तलाटी कम मिनिस्टर बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है, विलेज सेक्रेटरीट ऑफिस, या तलाटी मंत्री का ऑफिस भी कहते हैं। Now, every work required the sources, means money, is it? So from where this gram panchayat is getting the source of income? So water tax, cleaning tax, property tax, जो लोगों के काम कराते हैं हम लोग, जैसे वाटर का टैक्स है, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब का टैक्स कलेक्शन होता है जो विलेज में से, that is a one source. Another is a grant given directly to the panchayat or the gram panchayat by the state government and the central government. Now what are the functions of the gram panchayat? To provide, okay, उस गांव में जितने भी हाउस हैं या जो लैंड है तो उसको नंबर्स देना, that is the then arrangement of the household and the drinking water, then marking the road paths in the village, कौन से विलेज का क्या मार्क है या नाम है, all that things, then cleaning of the village street, disposal of the dirty water, maintenance of the public property, वहाँ पे जो भी पार्क है या गार्डन है, स्कूल्स हैं, ओके, तो इन सारी चीजों का मेंटेनेंस करने का काम ग्राम पंचायत का है। मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, lightning arrangement in the village, education facilities including the primary education, that is the education from the standard 1 to 8, that is an primary education, and the planning of the village development, कौन कौन सी चीजें नहीं है विलेज में उसके लिए प्लान बनाना, is it? Then the maintenance of the crop and the pastures in the village, और गांव में या विलेज में क्रॉप्स का मेंटेनेंस कैसे हो, जानवर के चारे का अरेंजमेंट कहाँ से हो, क्या हो, कितना हो, ओके, मेंटेनेंस ऑफ द लैंड एसेट ऑफिसेज, मेंटेनेंस ऑफ द बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, तो गांव में जिसका किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी का डेथ होता है, ये सारा रिकॉर्ड कौन रखते हैं, ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत में भी आप मेनली जब विलेज सेक्रेटरीट ऑफिस जाओगे, there you can see all these records. So these all are the functions of the gram panchayat. Functions means work. तो ग्राम पंचायत का ये सारा काम है, विलेज में देखना, इनको डेवलप करना।
नाउ व्हाट इज द ग्राम सभा? अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उनका एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जैसे गुजरात स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है? गांधीनगर में। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन दी गांधीनगर। वैसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ पर है? दैट इज इन पार्लियामेंट एट न्यू दिल्ली। तो वो एक प्लेस है जहाँ बैठ के वो लॉज बनाते हैं। तो जैसे कि ग्राम पंचायत है, वो 8 लोग हैं, तो वो कहाँ बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे? ओके, तो ये लोग गांव में ही बैठते हैं। ओके, and where the people of the village and these elected members of the panchayat sit together and decide the things, that is called the gram sabha. Okay, वो जो मीटिंग होती है गांव के लोगों का और ग्राम पंचायत का, एंड इट इज कंपल्सरी कि एटलीस्ट साल में 2 ऐसी ग्राम सभा हो, दैट इज एन मिनिमम। ओके, the more meeting they can arrange as per the requirement, but 2 meeting is compulsory. All the elderly peoples of the village are considered as the member of the gram sabha. Who all are the eligible to vote? They all are the member of gram sabha. The gram panchayat is required to organize the gram sabha at least twice a year, and sarpanch is the chairman of the gram sabha. So whatever discussion or the decision or the arguments happens in the gram sabha, who will take the last call? That is the sarpanch. Okay, because he is the head of that gram sabha. I think the concept of the local self-government at the village level is clear in this explanation. Okay, or else if there is a confusion, then please feel free to post your question to my WhatsApp account personally. Goodbye, good day.